रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन। Today we talk about again the remaining tenses. Last time we had learned present tenses, which is present simple, present continuous, present perfect continuous tense. These are we had learned last time. Now today we are learning about past tense. It means mazi. Today we have learned past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. So let's start our, I told you all the things just starting our today class. So today we talk about in present simple tense, past simple. So here is past indefinite tense. Today we are learning about past indefinite tense. This tense shows that something happened at the definite time in the past to show that the situation existed or continued for the period of time in the past but no more now. ये टेंस जाहिर करता है कोई काम माजी में किसी ख़ास वक्त में हुआ और कुछ देर जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। ख्याल रखें डिड के साथ वर्ब के हमेशा पहली फॉर्म आती है। इट्स मीन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डोंट डजंट नहीं, तो सिर्फ डिड नॉट यूज़ करेंगे। पैटर्न है इट्स मीन फार्मूला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। So these are affirmative sentences. We spent the whole day in shopping. हमने सारा दिन खरीदारी में गुजारा। The second is that he saw a horrible dream at night. इसने रात को एक भयानक ख्वाब देखा। The dog ran after the cat. कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। He died of the cholera. वो हैज़ा से मर गया। Your friend broke my pen. आपके दोस्त ने मेरा कलम तोड़ दिया। I sent them a parcel. मैंने इनको एक पार्सल भेजा था। He took his father's advice. इसने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया। We wasted a lot of our time. हमने अपना बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान won the match. पाकिस्तान मैच जीत गया। I saw him on the way. मैंने उसको रास्ते में देखा था। So these are affirmative sentences about past simple tense. So do practice and use this your own sentences. And this sentence we use in second form of the verb. Suppose we spent, see, saw, ran. Okay, run is the first and second is ran. Die and died. Break, torna broke. And sand. Take, took. Wasted. Win. First form win and second form won. See, saw. So these are when we use in affirmative sentences in this past simple tense we use the second form of the verb, not first form of the verb. Next we will learn in negative sentence how to use in negative past simple tense. But remember, and here we use second form of verb. You should memorize second form of the noun verbs. And past simple we use in also stories. When detailing about the story in past we tell this grammar. So next, in negative sentences, subject plus did not plus verb first form plus object. He did not act on his father's advice. उसने अपने वालिद की नसीहत पर अमल नहीं किया। I did not see him on the way. मैंने उसको रास्ते में नहीं देखा था। He did not die of the cholera. वो हैज़ा से नहीं मरा था। We did not go to his home yesterday. हम कल इसके घर नहीं गए थे। It did not rain here at night. यहाँ रात को बारिश नहीं हुई थी। So here these are
Negative, you can say I didn't have breakfast, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया. So we use like this, I didn't go school today, मैं आज स्कूल नहीं गया था. So these are the example. Next, simple interrogative sentences. The first come did, the after subject plus verb, first form verb plus subject. Did you meet her yesterday? क्या आप कल उससे मिले थे? Did they win the match? क्या वो मैच जीत गए? Did it rain in Karachi last week? क्या गुज़श्ता हफ्ते कराची में बारिश हुई थी? Did he cook food in the hotel? क्या वो होटल में खाना पकाता था? Did they make their promise? क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? So these are, did you go to school today? क्या आप जब when we talk about in the evening and talk about the morning time to discuss, so you say did you go to school today? क्या आप आज स्कूल गए थे? So these are the example. Did you meet her yesterday? Did they win the match? Did it rain in Karachi last week? And did he cook food in the hotel? And did they make their promise? So these are simple interrogative sentences. Next, real interrogative sentence and I.W. question we call pattern I.W. then plus did plus subject plus verb first form plus object. What did you tell him? What did you tell him? तुमने इससे क्या कहा? Where did he live? वो कहाँ रहता था? Why did he not write a letter to you? उसने आपको खत क्यों नहीं लिखा? When did he last come to your home? तो आखिर में तो आपके घर कब आया था? How did her friend do it? इसकी सहेली ने ये कैसे किया? So these are I.W. question. We will make a role play as well in this past simple. I will tell you after the class. We will discuss how to make a role play in past simple tense. So these are past simple tense, an affirmative, negative, interrogative, and these are I.W. question. How to make, and first come I.W. the depend of the word are you saying, what do you telling about? So what did you tell him? Where did he live? Why did he not write a letter to you? When did he last come to your home? How did her friend to do it? इसकी सही कैसे? Next, the second is past continuous tense. Past continuous tense. This tense shows that something was continuing at the particular time in the past. ये tense जाहिर करता है कि कोई काम माजी में किसी खास वक्त में जारी था या हुआ था. And pattern subject plus was verb plus verb ing plus object. And here we use was in word. The place of the present is MR, but here is 2 and there is 3. So when we talk about in present, we use in present continuous tense is MR. M we use for I just, and is we use for he, she, it, anyone name, and R we use for they, we, you. But here is 2. And when we use he, when we use I was, you was, he was, she was, Ali was, it was, Simon was. When we talk about were, they were, you were, and we were. So here we use past be words and plus verb ing plus object. I was listening to the radio at home. मैं घर पर रेडियो सुन रहा था. My mother was washing clothes. मेरी अम्मी कपड़े धो रही थी. He was getting late. उसको देर हो रही थी. I was taking exercise in the morning. मैं सुबह को वर्जिश कर रहा था. We were playing hockey in the ground. हम मैदान में हॉकी खेल रहे थे. Two men were fighting with each other in the street. दो आदमी गली में एक दूसरे से लड़ रहे थे. The police were searching for the criminal. पुलिस मुजरिम को तलाश कर रही थी. The police were searching for the criminal. पुलिस मुजरिम को तलाश कर रही थी. He was suffering from fever. उसे बुखार आ रहा था. My father was doing his office work. उसे बुखार आ रहा था. The children were making a noise in the class. बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे. And this sentence will be
together another sentence like I was eating food when my father came into the house. जब मैं खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा था तब मेरे अब्बू कमरे में आए. इसी तरह my mother was washing the cloth when I entered the house. जब मेरी अम्मी कपड़े धो रही थी तब मैं घर में एंटर हुआ. तो we will make these sentence and we call to conjunctions, and when we two sentence together we call conjunction sentence. Next, negative sentences pattern: subject plus was verb plus not verb ing plus object. I was not singing a song. मैं गाना नहीं गा रहा था. We were not running on the road. हम रोड पर नहीं दौड़ रहे थे. His younger brother was not taking an interest in studies. इसका छोटा भाई पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा था. The parrot was not imitating me. तोता मेरी नकल नहीं उतार रहा था. My cousin was not taking medicines regularly. मेरा cousin बाकायदगी से दवा नहीं खा रहा था. So these are negative sentences. We have written some sentence. For example, I was not singing a song. We were not running on the road. His younger brother was not taking interest in studies. The parrot was not imitating me. My cousin was not taking medicine regularly. Next, simple interrogative sentences. Here we use first was verb plus subject plus verb ing plus object. Was he telling a lie? क्या वो झूठ बोल रहा है? Were you talking on the phone? क्या आप फोन पर बात कर रहे थे? Was he having a cold? क्या उसे जुकाम हो रहा था? Was his friend doing his homework? क्या उसका दोस्त अपना होमवर्क कर रहा था? Was he wearing new clothes? क्या वो नए कपड़े पहना हुआ था? So these are simple interrogative sentence and interrogative sentence between सवालिया जुमला. So these are question sentences. Next, real interrogative sentence and I.W. question. Here we use I.W. plus was verb plus subject plus ing plus object. Who was teaching you? आपको कौन सता रहा है? Teasing. The something is verb is missing. Teasing. Who was teasing you? तो tease माने सताना. तो here is I have forgot to write in teaching. Here you use teasing. Who was teasing you? आपको कौन सता रहा था? What was he doing there? वो वहाँ क्या कर रहा था? Why were leaves falling from the tree? दरख्त से पत्ते क्यों गिर रहे थे? How was he driving the car? How was he driving the car? वो गाड़ी कैसे चला रहा था? But I didn't write here. Sorry for the writing. What was happening to her? उसे क्या हो रहा था? What was happening to her? Now, past perfect tense. We often use past perfect tense to show two action in the past. The one which happens earlier takes the past perfect and the other which happens later takes the simple past tense. ये टेंस तौर पर माजी में दो कामों को जाहिर करता है. जो काम पहले हुआ था उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ था इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. So, affirmative sentence past perfect tense. The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. The thief had fled before the police came. Fled before the police came. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. After he had read the letter, he tore it up.
खत पढ़ थेयर माने फर्स्ट फॉर्म थोड़ इट अप खत पढ़ने के बाद उसने उसे फाड़ दिया। थोड्स तेयर का सेकंड फॉर्म, तेयर माने फाड़ना कोई चीज़, पेपर वगैरह। तो खत पढ़ने के बाद उसने उसे फाड़ दिया। He went to the office after he had breakfast. नाश्ता करने के बाद वो दफ्तर चला गया। He had gone from there before I phoned him. मेरे फ़ोन करने से पहले वो वहाँ से जा चुका था। We had already met him. हम उससे पहले ही मिल चुके थे। I had never met him before. मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। When I had finished my homework, I went to sleep. जब मैंने अपने होमवर्क ख़त्म कर लिया तो मैं सो गया। He had already visited सवात. वो पहले ही सवात की सैर कर चुका था। You had already talked to him. आप पहले ही इससे बात कर चुके थे। So these are past perfect tense affirmative sentences, and use your own wording. These are for tense 10, for example 10 sentences. For example, like this uses, and the here we use third form verb. A negative sentence pattern. I had never made an air trip before. मैंने कभी हवाई सफ़र नहीं किया था। He had never been to सवात. वो कभी सवात नहीं गया था। I had never seen this picture before. मैंने ये तस्वीर पहले नहीं देखी थी। He had never suffered from flu. उसे कभी फ्लू नहीं हुआ था। We had not had breakfast yet. अभी हमने नाश्ता नहीं किया था। So these are present perfect tense and negative sentences. Simple interrogative sentence pattern. Had you ever come here before? क्या आप यहाँ कभी पहले आ चुके थे? Had someone seen you there? क्या तुम्हें किसी ने वहाँ देखा था? Had he ever suffered from typhoid? क्या उसे कभी टाइफाइड हुआ था? Had you never read this novel? क्या तुमने कभी ये नावल नहीं पढ़ा था? Had they already lost hope? क्या वो पहले ही नाउम्मीद हो चुके थे? So here is real interrogative sentences. Real interrogative sentences. Next, real interrogative sentence in I.W. question. I.W. plus head plus subject plus verb third form plus object. Where had he taken admission? उसने कहाँ दाखिला लिया था? How long had you been there? आप वहाँ कब से थे? Why had you not talked to me before? आपने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की थी? Who had stolen his pen? Who has stolen his? किसने इसका पेन चुराया था? What had you done there? आपने वहाँ क्या किया था? So here is I have written in 4 translation. One is remaining. Who had stolen his pen? किसने इसका पेन कलम चुराया था? So these are real interrogative sentences about present, past, perfect tense. So memorize all the tenses, past tenses. I will take a test inshallah after the complete the tenses. And next, past perfect continuous tense. Last but not least, past perfect continuous tense. This tense shows that something had been happening before a period of time before something else happened. ये टेंस जाहिर करता है कि कोई काम किसी ख़ास मुद्दत के लिए जारी रहा था किसी दूसरे काम के होने से पहले। So pattern subject plus had plus been plus verb plus ing plus form plus object. So affirmative sentences. It had been raining here for 2 days. यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही थी। He had been working there for 4 years. वो वहाँ 4 साल से काम कर रहा था। He had been suffering from fever since Monday. उसे पीर से बुखार आ रहा था। He had been wasting his time for a long time. वो काफ़ी अरसे से अपना वक्त ज़ाया कर रहा था।
He had been lying to me, वो मुझसे झूठ lying to me, वो मुझसे झूठ बोलता रहा था. I had been writing poems since childhood, मैं बचपन से नज़में लिख रहा था. He had been preparing for his exam for 2 months, वो 2 माह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा था. I had been watching the match since morning, मैं सुबह से मैच देख रहा था. My elder brother had been playing cricket since 2021. मेरा बड़ा भाई 2001 से क्रिकेट खेल रहा था. Okay, missing something translation. We had been waiting for you since 5 o'clock. हम 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे. So these are affirmative sentences and present perfect, past perfect continuous tense about. So these are affirmative sentences. Next, negative sentences. Subject plus had plus not plus been plus verb plus ing plus object. It had not been raining here for 2 days. यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी. He had not been working there for 4 years. वो वहाँ 4 साल से काम नहीं कर रहा था. He had not been suffering from fever since Monday. उसे पीठ से बुखार नहीं आ रहा था. He had not been wasting his time for a long time. वो काफ़ी अरसे से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था. He had not been lying to me. वो मुझसे झूठ नहीं बोलता रहा था. So these are negative sentence, present, past perfect continuous tense. Subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. So it had not been raining here for 2 days. यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी. इसी तरह मैं 2 दिन से अपने काम पे नहीं जा रहा हूँ. I had not been going my work 2 days. So here is example. You make yourself to practice at home. इसी तरह he had not been working there for 3 days. वो 3 दिन से काम नहीं कर रहा. So here is he had not been wasting his time for a long time. वो काफ़ी अर्से से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था. Next, simple interrogative sentences. Had plus subject plus been verb plus ing plus object. Had I been writing poems since childhood? क्या मैं बचपन से नज़में लिख रहा था. Had he been preparing for his exams for 2 months? क्या वो 2 माह से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा था. Had I been watching the match since morning? क्या मैं सुबह से मैच देख रहा था. Had my elder brother been playing cricket since 2001? क्या मेरा बड़ा भाई 2001 से क्रिकेट खेल रहा था. Had we been waiting for you since 5 o'clock? क्या हम 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे. So here is simple interrogative sentences. Next, real interrogative sentence and I.W. question. So here is lost. I.W. plus had plus subject plus been plus verb ing plus object. Where had you been living for 2 years? आप 2 साल से कहाँ रह रहे थे. Who had been ringing you for 2 days? आपको 2 दिन से कौन फ़ोन कर रहा था. Why had you not been talking to him since last week? आप इससे पिछले हफ्ते से क्यों बात नहीं कर रहे थे. Why had you been hiding
दिस थिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे ये बात क्यों छुपाते रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड ही बिन लिविंग इन कराची, वो कराची में कब से रह रहा था। So these are example about real interrogative sentence and I.W. question. So today we have learned all the past simple tenses, past simple tense, past simple continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So these are again I am revision of these all the sentences again. Okay, present tense, past tense, present simple tense. Last time we have learned present indefinite tense. Present indefinite tense shows habit, repeated actions, universal truth and daily routine. So habit, आदत, repeated action, तकरारी आम को काम जो बार बार होते हैं, आलमगीर सदाकत, रोज़मर्रा ज़िंदगी daily routine. So here we use in present indefinite tense I, you, they, we. These are subject. If you make a sentence negative, we use I don't. If you third person, we use he doesn't. And these are sentences. And this past continuous tense we learn. These are the structures. For example, some sentences: present perfect tense, continuous tense, negative sense. Now today we have learned these past indefinite tense, how to use these examples we have learned here. I think you have got it all this, we have learned all the past about okay, we have learned in past and future is remaining, future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So today now we learn some today vocabulary some. Okay, to learn vocabulary is also important. If you don't know the meaning of the vocabulary, how to speak up that word. So today again I'm just some vocabulary. So our today vocabulary, these are vocabularies. Airport, they all about airport words which is we use in airport. When we in airport we use these vocabulary. So first is aeroplane, it's mean tayyara. The aeroplane, tayyara. This is words, alfaz, pronunciation, talaffuz and meaning and with pictures. So aeroplane, tayyara. Airbus, Airbus, it's mean bigger than an aeroplane. And then booking office, ticket ghar. So memorize these vocabulary and write your register as well and capture the pics, screenshot. Booking office, ticket ghar. Control, it's mean control room, like they are controlling aeroplane. And custom counter to check about passport, anything, luggage. And domestic flight, अंदरूनी मुल्क परवाज़, किसी और मुल्क में जाना. इंजीनियर्स, यूरोपियन फ्लाइट, यूरोप की परवाज़ें. फ्लाइट, परवाज़. लेट, ताख़ीर. ओवरसीज़, समंदर पार. एंड पैसेंजर्स, मुसाफिर. पायलट, प्लेन, तैयारा. radar. And radio control, reception, istaqbaliya, when we
enter the office any runway हवाई जहाज दौड़ने का रास्ता schedule मुकर्रर औकात like a timetable like a when the which flight is this time go and that time store खानसमा terminal ticket to land नीचे उतारने तैयार आपको transit launch गुजरगाह VIP launch इट्स मीन VIP launch जगह होता है वेटिंग रूम इंतज़ार गाह workshop and then हवाई ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट अब एरोप्लेन हवाई जहाज बलून गुब्बारा हेलीकॉप्टर पैराशूट रॉकेट and then spaceship खलाई जहाज then we animals now we vocabulary of animal aardvark चुंटी खोर antelope बारासिंगा एप लगूर एस गदा बबून लगूर बचर बचू so maybe you can't see these of animals there are a lot of animals involved bandicoot gons beer reach bior odubla besan bensa bitch kutia black bear kala rich बोर जंगली सुअर बफेलो बैंस बुल सांड या बैल ब्लोकस बैल बैट चिमकाडर कॉफ बछड़ा कैमल ऊंट केट बिल्ली चिंपैंजी अफ्रीकी बन मांस काव गाय क्रोकोडाइल मगरमच्छ कोबरा काला नाग डियर हिरन डोहाइंट हरनी डॉग कुत्ता डोंकी गधा डोरमेंड्री सांडनी एलिफेंट हाथी एवे मादा बेर फॉक्स लोमड़ी फ्रॉग मेंढक zrafa got बकरी gorilla बन मांस hare या rabbit we call rabbit also ये hare खरगोश he got बकरा hedgehog जंगली चूहा hippopotamus अफ्रीकी दरियाई horse घोड़ा hound शिकारी कुत्ता हैरिक्स पहाड़ी खरगोश हाना लगड़ बगड़ जिगर अमेरिकन चीता जैकल गीडर कैंगरो कीवी लेपर्ड चीता लायन बब्बर शेर मिनाई दरिया पंसा मोल चिंचुदर मेयर घोड़ी मोगस न्योला मोंकी बंदर माउस चूहा म्योल खच्चर मस्क डेयर मश्क वाला हरण ऑस्ट्रिच शतरमुर्ग ऑन्स बगेला ऑक्स बैल पांडा पैंथर चीता पिगुइन पिग या सुअर pony टटो porcupine खारपशसिया prawn झींगा मछली python अजदा rabbit खरगोश ram मेंढा rat जंगली चूहा rhinoceros गीदा शिगोट
बकरी, sheep, bear, snake, सांप, snow bear, बर्फानी रीछ, squirrel, गुलहरी, स्टेग, बारहसिंगा, swan, सुअर मादा, टाइगर, शेर, टॉम, बिल्ला, tortoise, कछुआ, वैक्सन, लोमड़ी का बच्चा, वार्डलेस, दरियाई गाय, विसाल, नेवला या रसुआ, वाइल्ड एस, गोखर, वुल्फ, भेड़िया, याक, सरागाय, ज़ेब्रा, हारन, सिंह, पाव, पंजा, टेल, दम, and whiskers, gilmich. So these are animals name 95. So vocabulary, these are vocabulary I'll show you. जानवरों के बच्चे, animals babies, and babies what we call cows गाय का बच्चा है, bear, calf गाय का बच्चा, caterpillar तितली के पतंगे का पहला रूप, chickens मुर्गी के बच्चे का चूजे, colt घोड़े का बच्चा, cubs शेर का बच्चा, cygnets राजहंस के बच्चे, ducklings बतख के बच्चे, fawn हिरण का बच्चा, foals घोड़े का बच्चा, joy खिंगुरों का बच्चा, kid बकरी का बच्चा, kittens बिल्ली के बच्चे, lynx बैल के बच्चे, lioness खरगोश का बच्चा, piglets सूअर के बच्चे, pips कुत्ते के बच्चे, टिडपोल्स मेंढक के बच्चे, वुल्व्स रीछ के बच्चे या भेड़िए. Now we some I think he is written here. Okay, now we learn some food. Biscuit and BISC we also learn, and these are vocabulary to memorize the spelling as well, meaning as well, and pronunciation, how to pronounce in this sentence. Biscuit, bun, bread, roti, naan, slash we call these. Cream, balai, cream roll, butter, makhan, cheese, paneer, tea powder, चाय की पत्ती, coffee, fruit bun, fruit cake, eat cake, ice cake, these are kinds of the cake. Petis, wafers, naram khasta biscuit, rusks, pape rusks, cake rusk, pasty, sheer cake, sheermal, and large cake इसमें बड़ा केक, small cake छोटा केक, chocolate, टॉफियाँ, lollipop, dried milk इसमें खुश दूध, and then we use birds, it's mean albatross, kadus the kind, bat chimkadar, blue jay neelkant, chicken chooza, cook murg, chick chooza, crow manja, crane saas, crow kawa, coco quail, dove fakhta, drake बतख नर, duck बतख मादा, dickling बतख का बच्चा, eagle अकाव, feather पंग, falcon शिकराबाज, flamingo लाल लेम ढेंक, गोस राजहंस, गोसलिंग राजहंस का बच्चा, हुक शाहीन, हुक
hen मुर्गी, heron सार्स, hop हद, kingfisher राम चिड़िया, kite चील, kiwi lark पहाड़ी कौवा, magpie नीलखंड, मीना, nightingale बुलबुल, ostrich शतुरमुर्ग, उल्लू, parrot तोता, partridge तीतर, peacock मोर, peahen मोरनी, pelican penguin, fishnet चकोर, pigeon कबूतर, potter लॉटन कबूतर, buffon बहरी तोता, quail बटेर, robin लाल चिड़िया, rock पहाड़ी कौवा, seagull समुद्री बगला, sparrow चिड़िया, starling दलेर, stork बगला, swallow अबाबिल, swan हंस, turtle नरशाहीन, तुर्की मुर्गा, विल्चर गधा, वीवर बिया, वॉलडक मुर्गाबी, विंग्स परिंदे के बाजू या पर, वुडपिकर हड, देन stationery, book and stationery. These are vocabulary of the book and stationery. Arabic अरबी, Atlas नक्शों की किताब, chalk chemistry book, color box, commentary शुरा या तफसीर, commission concession रियायत, course निसाब, customer ग्राहक, डिस्काउंट कटौती कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स बरकियात, इंजीनियरिंग, इंग्लिश अंग्रेज़ी, फ्रेंच फ्रांसी, गैजेट नतीजा का किताब, जर्मन ज़ुबान, गेस्ट खुलासा, लॉ बॉक्स कानून की किताब, लिस्ट ऑफ बॉक्स किताबों की फहरिस्त, लिटरेचर अदब, मैप्स नक्शे, ऑन क्रेडिट उधार देना, पैकिंग बांधना, प्रेसेंट फारसी, रिटेल खुर्द फरोश, स्लेक सीज़न मंदे का मौसम, सिलेबस निसाब, टेक्स्ट बुक दरसी किताब, वाउचर रसीद, होलसेल थोक का कारोबार, एंड देन बाथरूम एंड लेबोरेटरी इसमें गुसल खान और बैतुल खला की वोकैबुलरीज हैं। अब वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सो फर्स्ट इज बाथ और ट्यूब, वी कॉल बाथ और ट्यूब टिप, and bath mat is a kind of these pictures look at here, bathroom scales bathroom गुसल खाना, ब्लेड बकेट बाल्टी डोल जो बाल्टी होती है, बकेट, कॉम कंगा विच इज़ वी सेट आवर हेयर, अपने बालों को सेट करते हैं उससे, कॉम्ड पार्ट कॉम्डो जैसे माजूर अफराद जो उसमें हम बिठाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेजर है, ईवर लोटे को ईवर कहते हैं, फेस फर्नल मुना साफ करने का रुमाल, एंड फ्लैश टंकी फ्लैश सिस्टर्न, एंड हेयर ब्रश बालों का ब्रश, हेयर क्रीम बालों का क्रीम, हेयर ऑयल बालों का तेल, मग प्याला, नील ब्रश नाखूनों का ब्रश, पलक रेजर स्ट्रॉ, सेफ्टी रेजर, शेविंग ब्रश, शेविंग सॉप साबुन, शावर गुस्ल का फुव्वारा, शावर का कटन, सूप टॉयलेट नहाने का साबुन, टैप नल, बॉक्स ऑफ टिश्यूज़
टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल, टूथब्रश, दांतों का ब्रश, टूथपेस्ट, टॉवल, तौलिया, टॉयलेट, बैतुल खला, WC pen, commode, and wash basin. So memorize these vocabulary in your mind and read and write again and again. So इसमें आपने लिखना होता है कि आप vocabularies हैं, vocabulary you learn in 2 daily basis पे. If you want to learn 2 and multiply with 216 1 month. So इस तरह vocabulary power, if you want to improve your vocabulary power, to read and again and reading and memorize these vocabulary in your mind and use in your sentences. Like, this is a toilet, that is my toothpaste. Where is toothpaste? Where is my toothbrush? And that one is yours. Which one is? The blue one is mine. So use like this, speaking wise. I want to a box of tissues. How much is it? So इस तरह I need a soap. I don't have a soap. Shower. I take a shower. अब जैसे present simple आपने सीखा I take a shower, तो use in these sentence. अब आते हैं bedroom, सोने का कमरा. These are vocabulary of the bedroom which is we use in bedroom. Bed cover, बिस्तर का चादर. Bed spread, पलंग पोश. Blanket, कंबल. Mom, where's my blanket? Your blanket is outside the room. Your blanket is store. So use this. Bookcase, किताबों की अलमारी. Chest of drawers, दराज वाली अलमारी. Comb, कंघी. Coat, पलंग. Cupboard, this is my cupboard. This is not my cupboard. Like this use. I have a cupboard. I have an expensive cupboard. Dressing table, singer's maze. Hair brush, बालों का brush. Coat hanger. Jewelry box, जेवर वाला संदूकचा. Mattress, गदा. Mirror, शीशा. Pillow, तकिया. Pillowcase, तकिया का गुलाफ जैसे उसका कवर होता है. Colt, रज़ाई. Curtain, पर्दा वूट. Sheet, चादर. Stool. Lamp, table lamp. Wardrobe, अलमारी. And building and places, इमारतें और जगह. Now these are vocabulary about building and places. Apartment, आरास्ता घर. Airport, हवाई अड्डा. Bank, balcony, glorious है. Building, इमारत. बंगला. Cafeteria, castle, किला. Church, गिरजा. Cinema. So these are places which is we go anywhere. Convent, खानका. Court, अदालत. Department store, factory, कारखाना. Farm, खेत. Fort, किला. Garage, garden, बाग. गोदाम. Harbor, बंदरगाह. House, घर. Home, घर. Hospital, अस्पताल. Hotel. Hut, झोंपड़ी. Inn, सराय. Library, कुतुब खाना. Left, मस्जिद. Mint, टकसाल. Museum, अजाबगर. Office, दफ्तर. Palace, महल. Park, तफरीगाह. Police station, थाना. Post office, डाकखाना. Peer, गोदी. Press, छापा खाना. Prison, जेल खाना. Railway station. Restaurant, तामगा भी बोलते हैं उर्दू में. Roof, छत. School, shop, दुकान. Supermarket. Theater. Temple, मंदिर. Temple means मंदिर. Tower, मीनार. Treasury, खजाना. University. Zoo, चिड़ियाघर.
सो देन क्लॉथ्स में मर्दों के कपड़े, एप्रन तेबन which is we cook, the person wear, and at home also wear, so safety for the clothes. Breeches uncha pajama, belt patti belt, coat collar globan, jeans jacket, kurta line cloth dhoti, longi tehban, underpants ज़ेर जामा, रेनकोट बरसाती कोट, शर्ट कमीज, शॉर्ट्स नेकर, सूट टी शर्ट आदि आस्तीन की कमीज, टाई नेक टाई, टर्बन पगड़ी सफ़ा. Then clothes women, then men clothes and clothes women. Borders chuli, bra chuli, brooch round pin, buckle bucksqua, dupatta ori dupatta, frog, full slip शमीज की तरह लिबास, girdle पीटी, कैम्स कमीज, नाइट ड्रेस शब ख्वाबी का लिबास, शलवार साड़ी, शॉल स्कर्ट लहंगा, स्लैक्स केटल लहंगा, वेल या यशमिक बुरका निकाब. Then clothes types, कपड़ों की किस्म, brocade कम ख्वाब, calico लट्टा, these are material of the cloth. Cambric, chiffon, car dry मोटा कपड़ा लाइंद्रा, cotton सूती, crepe, doria, embroidered cloth कढ़ाई वाली कपड़े, flannel flaline, jaconet नेट सेट, leather चमड़ा, merino, muslin मलमल, nylon polyester, rayon मसनूई रेशम, satin सरचूनी कपड़ा, सिल्क रेशम, टर्की लाल कंद, ट्वेट कोट का गर्म कपड़ा, वेल्ट मखमल, वून. क्लोज मोर वर्ड्स लिबास मजीद अल्फाज, बिगी कैला, ब्लेजर खिलाड़ियों का कोट, बूट्स टखनों से ऊंचा जूता, ब्रेफकेस बटन होल काज, कैप टोपी, कैप बेआस्तीन की कुबा, कार्डिगन बाजू वाली बनी हुई ओनी चेकित जर्सी, चप्पल स्लीपर भी विकेल स्लीपर आल्सो, चेस्टर ब्रा कोट, क्लॉक अंगड़ा का चगा, कफलिंग्स आस्तीन की बटन, ड्रेस अप लिबास पहनो, ईजिंग मोगजी एलिगेंट शानदार, एम्ब्रॉयडरी कशीदाकारी, IF निडल नाका, फेस तुर्की की टोपी, फिट मोज़ोटीक बैठना, फोल्ड लपेटना, गैम्बरडेन बरसाती कपड़ा, गालोश रबड़ की बरसाती बूट, गार्डर मोज़ोबंद, गेट ड्रेस्ड अप तैयार हो जाओ, गल्व्स दस्ताने, ग्राउंड आउट ऑफ छोटा हो जाओ, गम बूट्स रबड़ के लंबे जूते, हाफ स्लिप कमर से घटने तक लिबास, हैंड बैग हाथों में पकड़ने का थैला, हैंड करचीफ रुमाल, हैट अंग्रेजी टोपी, हेलमेट हीम तरपाई जोली, किट निटिंग बनना, लॉन्ग सिल्फ्ट लंबी आस्तीन, लॉज ढीला, मेकअप बनने ठहरने का मवाद, मैच जोड़ मेसी बेतरतीब, मफलर ओल्ड फैशन पुराने फैशन का, वोरकोट पीच पेवंत, पैटर्न खड़ाव, प्लेट सोल्ट डालना
ग्रेज बनाना, पॉकेट जेब, पुलोवर कोटी, पर्स पुट ऑन पहनना, हील ऑफ कॉटन कपास की रैली, रिबन सैंडल चप्पल, स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल की वर्दी, सीम सिलाई, स्विंग सीना, शू जूता, शूलेस तस्मे, शॉर्ट सुल छोटी आस्तीन, स्लीव आस्तीन बाजू आस्तीन, सिलुलिस आस्तीन के बगैर, स्लीपर खुले जूते स्लीपर, सॉक्स जोराबे मोजे, सोल तल्ला, स्पीकटिंकल्स चश्मा ऐनक, स्पिकल्स, स्टॉकिंग्स लंबे जोराबे, स्ट्रिप घड़ी का तस्मा फीता, स्वीटर स्विम सूट तैराकी की लिबास, टैप मेजर पैमाइशी फीता, टार्ट तंग, टुक ऑफ उतारना, ट्रैक सूट वर्जिश का लिबास, ट्रेंडी रोजानी मिलानी, टेंडेंसी रोजानी मिलानी, ट्राई ऑन पहन कर देखना, ट्यूबल निकाब के लिए कपड़ा, ट्वीट कोट का गर्म कपड़ा, अम्ब्रेला छतरी, अनड्रेस्ड बेलिबास, वीनेक वीगला, वेल निकाब बुरका. So these are and wallet बटुआ, रेस्ट वॉच हाथ की घड़ी, रेस्ट वॉच हाथ की, विंग्स मातवी लिबास, विल रेस्ट उमूदा लिबास, जिप. And these are enough for today vocabulary. There are a lot of vocabulary I today show you. We have read it, we have memorized some. You should screenshot, you have memorized these all. True vocabularies, animals, baby child, fruits, birds we learn. So memorize these and speak up in front of your friend. You should be speak in front of your people. So I suggest you to memorize all the tenses. Maybe I will be take a test and I will be make ask some vocabulary as well. Today I show you some vocabularies. So memorize all the today past simple tense, past simple continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. I have learned it today. So let's go to this is time to finish our class. Okay, this lecture to finish. So I want to finish our class. इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.